Hello friends, in the past video we have talked about the prism. Okay, now in this video we are trying to learn the concept of prism theory, and that theory we try to implement on the practical application of the prism. It means that we are trying to solve the examples of the prism. Okay, now the first question, there is a sixth question of your exercise is that, okay, so what is the question? At what angle should a ray of light be incident on the face of a prism of refracting angle 60 degree so as to so that it just suffer the total internal reflection at other face? Okay, and the refractive index of the material of the prism is 1.524. Okay, so what is the question want to tell us? Here you have to ultimately find out the at what angle ray should be incident. It means you have to find out the value of IC here. Yes or no? So write down in a find out IC equal to question mark on the face of the prism of refractive angle. So here refractive angle is 60 degrees, nothing but it's a prism angle, and prism angle we have write down as A, and A equal to we are here write down as the what? 60 degree. Okay, so in the given data write down the A equal to 60 degree so that it just suffer the total internal reflection at the other face. So here what two faces you have to consider? First is the AB surface and second one is the AC surface. What surface? AC. It means what? Whenever you are incident your ray on the AB surface, barabar, so first of all it will get refract. Why? Because it go from rare medium to the denser medium. But whenever this refracted ray is continue in the prism medium and it reaches to the surface AC, again it has to go from denser medium to the rare medium. So at that time it again it will exert the what? Refraction. Okay, so again it will face the refraction, but here what we have to consider, at that point it must be totally internal reflect. Okay, now when we are getting the total internal reflection, okay, whenever our incident angle on the surface will be what? Critical angle. ओके, क्रिटिकल एंगल जब होगा तभी यानी कि हमारा इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, देन एंड देन वी विल फाइंड आउट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो हियर फॉर AC surface QR will become the incident ray. First of all understand PQ is an incident ray for AB surface and QR will be refracted ray for the AB surface, but that QR ray will be become incident ray for the AC surface. Okay, and at AC surface on point R it must be what? Totally internally reflect. It means that QR ray must make the angle with the normal of AC that is equal to the IC means critical angle. यानी कि यहाँ पे जो QR रे है जो AC सरफेस के लिए इंसिडेंट रे है तो उसका जो एंगल AC सरफेस के नॉर्मल के साथ बनेगा, दैट एंगल मस्ट बी व्हाट? critical angle. Okay, now what is the definition, otherwise the equation of critical angle? Sin IC equal to what? 1 upon n. हम लिखते थे कि नहीं लिखते थे अंदर? Okay, so here the refractive index of the prism material is given, that is n is given. Okay, so we are taking 1 upon n means reciprocal, and from that we have to find IC equal to sine inverse and whatever your value you are got. Okay, and find out what is the value of IC. So based on your calculation you will find that your IC will be what? 41 degree. Yes or no? Okay, now know the recall the prism theory in which we are deriving the second or third equation, that is R1 plus R2 equal to A. Yes or no? Here we have to find out the R1. Why? Because if I have to find out the value of incident angle on the AB surface, then I must know the value of refracted angle at the AB surface by the QR ray. Yes or no? Because if you know the R1, then by applying the Snell's law you are able to find out easily the value of incident angle. Okay, so here you have to use that formula, that is R1 plus R2 equal to what? A. Okay,
So R1 plus R2. So make here question as R1. So R1 equal to A minus R2. But you know the value of A, that is prism angle, which is 60 degree. And IC you have already derived from the above value, that is what, 41 degree. Okay, just subtract these two value, you are find that your R1 will be what, 90 degree. So means on AB surface QR is a refracted ray, and it will make the refracted angle, that is R1, equal to what, 19 degree. Now what you have to do to find out the incident angle, you have to apply the Snell's law on the surface AB. Okay, so what is our Snell's law? N1 sin theta 1. Okay, but here theta 1 is or I, equal to N2 sin क्या होगा, R1 होगा यहाँ पे, yes or no? Okay, now N1 is air, so you have to write down as 1. N2 is what, glass. So prism का जो glass का मटेरियल उसका refractive index हमको पता है, I you have to find out, and R1 आपने अभी फाइंड किया थोड़े टाइम पहले अंदर, हाँ कि नहीं, बराबर. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उस हिसाब से उसका इक्वेशन डिराइव करना है. तो क्या मिलेगा, साइन आई इक्वल टू क्या होगा आपका इक्वेशन, म्यू साइन R1 होगा. आप सिंप्लीफाइड करोगे वो स्नेल्स का लॉ, तो आपको ये फॉर्म मिलेगा. तो आपको म्यू पता है और R1 की वैल्यू पता है, तो साइन 19 फाइंड करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको साइन आई मिलेगा, और फिर उसका इन्वर्स करो तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, इंसिडेंट एंगल मिलेगा अंदर. ओके, एंड दैट इंसिडेंट एंगल वैल्यू विल बी व्हाट, 30 डिग्री फॉर दिस कंडीशन. Okay, so in this way you have to find out the incident angle for the given question. Okay, I think you have cleared this doubt, clear this example. Okay, now we will go for the next example. Now what is the next example? A prism is made up of the glass of unknown refractive index, means they are does not provide the refractive index value of the given prism material. A parallel beam of light is incident on the face of the prism, and the angle of minimum deviation is measured to be 40 degree. So here in the given data we are write down as delta m equal to 40 degree. Now what is the refractive index of the material of the prism? So from that we have to find out the value of refractive index, that is n, and it is a glass, so you have to write down Ng, otherwise N2, whatever you are wish, that you have to mention as a symbol. Okay, so here you have to find out the refractive index of the prism. Just recall the formula of refractive index of prism. Okay, here we write down the formula, what, n equal to sin a plus delta m divide by 2 and whole divide by sin a by 2. याद है ये फॉर्मूला, और मैंने वहाँ पे ये भी बोला था कि ऐसा नहीं होगा, 2 कट हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट ऑल दिस वैल्यू, टेक देयर साइन, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टेक द डिवीजन. याद आ रहा है थोड़ा बहुत? ओके, सो हियर वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, एंड इफ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला देन यू विल गेट योर आंसर. A is given, delta m is also given, yes or no? ओके, सारे की वैल्यू दी हो, वैल्यू प्लेस करो और n की वैल्यू क्या करो, फाइंड करो यहाँ पे. तो चलो हम सॉल्यूशन पे एक नज़र लगा देते हैं, बराबर. सो यहाँ पे रिफ्रैक्ट इंडेक्स में वही चीज़ की है, तो 60 + 40, ओके, एंड डिवाइड बाय 2, यानी कि 100 डिवाइड बाय 50 होगा, और यहाँ पे साइन 60 डिवाइड बाय 2. वाई? बिकॉज a इक्वल टू 60 डिग्री, yes or no? So it will become sin 30. You know the sin 30 and sin 50 you have to find out by using your calci. So finally you are getting your refractive index as 1.532. It means that your prism having material that possess the refractive index equal to what, 1.532. Okay, but in this question there is something extra is also given. क्लियर नहीं हो रहा है अभी, तो कोई बात नहीं, बराबर. चलो, तो क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है हमको, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री इफ द प्रिज्म इज प्लेस इन अ वाटर दैट हैविंग द रिफ्रैक्टिव 1.33. यानी कि यहाँ पे आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, दैट यू हैव टू राइट डाउन एज NW इक्वल टू 133. प्रिडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट. यानी कि वही की वही कंडीशन रखनी है, बट यू हैव टू रिप्लेस द एक्सटर्नल मीडियम ऑफ द प्रिज्म. इन द फर्स्ट केस द मीडियम इज एयर, बट इन द सेकंड केस you have to consider the water, and for that you have to find out the what angle of deviation, that is delta m you have to find out. So again you have to use the same formula. Okay, आपको वही की वही formula use करनी है अंदर. Clear? So what is the formula?
n equal to sin a plus delta m divided by sin a by 2, but a is fixed for all the condition, okay, that is 60 degree. But on the left hand side you are write down only n, okay. So when we are able to write down only n, whenever we are having the air medium outside, actually that is n2 divided by n1 है. जो डिनोमीटर में n1 था वो एयर था, एयर के लिए n तो 1 था, इसलिए हम लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता था. बट यहाँ पे वाटर है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे Ng डिवाइड बाई एन डब्ल्यू लिखना पड़ेगा, बराबर है. और वही का वही इक्वेशन कंटिन्यू रहेगा अंदर, बराबर है. समझ में आ रहा है सबको? चलो, तो यहाँ पे जितनी की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल सबकी वैल्यू रखो. तो साइन 30 0.5 होगा. हमको ग्लास का, प्रिज्म का रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऊपर वाले पार्ट में अभी फाइंड किया, दैट यू हैव टू राइट डाउन 1.532. वाटर का ऑलरेडी दिया. सबसे पहले इसका रेशियो फाइंड करो. ये 0.5 उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, उससे मल्टीप्लाई करो, बराबर है. और फिर उसके बाद उसका साइन इनवर्स फाइंड करो, बराबर. तो साइन इनवर्स आपको 35 डिग्री और 10 मिनट समथिंग मिलेगा. फिर उसमें आपको डीएम को क्या करना है, सिंप्लीफाइड करना है. तो इफ़ यू सिंप्लीफाई योर डीएम then you will get your answer as 10 degree and 20 minute, okay. So in this way you have to find out this question, okay, and you have to try to understand what the question is demanding and how to we solve the example, okay. जब भी आप क्वेश्चन पढ़ने का खुद से क्वेश्चन पूछोगे तभी आपके माइंड में उसकी प्रोसीजर थोड़ी बहुत क्लियर होगी. और जो जब भी क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है, समझ लेना आपको थियोरी तब जाके कम्प्लीटली समझ आई है. अदरवाइज आप एग्जाम्पल जितनी भी बार करोगे आपको हर बार रिपीट करना ही पड़ेगा अंदर, बराबर. तो हम ये सेशन यहाँ पे एंड कर रहे हैं. अगले नेक्स्ट वीडियो का इन विच वी आर ट्राई टू लर्न अबाउट द लेंसेज, ओके. थैंक यू.